acceleration due to gravity. Gravity की चीज है या the gravity, the force of attraction exerted by the earth is called gravitational pull or gravity. Similarly, acceleration due to gravity is defined as the acceleration produced by the body under the effect of the gravity is called acceleration due to gravity. The earth attracts every body towards itself due to the gravitational pull. Acceleration due to gravity ਆ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਾਹੇ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟਰ ਆ ਚਾਹੇ ਬੋਡੀ ਹੈਵੀ ਆ, ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹਲਕੀ ਆ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਭਾਰੀ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ the acceleration is produced in the motion of the body under the effect of gravity is acceleration due to gravity। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਰਥ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ m ਔਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਬੋਡੀ ਔਰ ਇਹ ਇਹਦਾ r ਹੈਗਾ ਆ ਰੇਡੀਅਸ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ m ਹੈ ਮਾਸ। ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ m ਔਰ ਇਸ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ m। ਇਹ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੋਡੀਆਂ ਡਿਊ ਟੂ देयर ਮਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ the force is directly proportional to product of their mass। अर्थ का मास इतना हैगा m और इस बॉडी का मास कितना हो गया स्मॉल है। और यह जो डिस्टेंस है अर्थ ने इनू खिंचना सेंटर तो अपने वाल खिंचती है वो डिस्टेंस है अपने को r स्केयर। अर्थ का डिस्टेंस की हो गया r स्केयर और f इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप जी मानते हैं और ये हो गया m स्मॉल m इंटू r स्केयर। हुण जिहड़ी यह बॉडी हेठों आ रही है इस बॉडी का मास कितना सी जिहड़ी फोर्स लग रही है फोर्स हो गया मास इंटू इसका एक्सलरेशन और ये मास इंटू एक्सलरेशन फोर्स हो गई जिहड़ी कि इस बॉडी की लगती है मास इंटू एक्सलरेशन। सो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। सो एम ए इज इक्वल टू जो कंबाइन करिए m कैपिटल M स्मॉल m बॉडी का मास अपॉन r स्क्वायर कैंसल। सो a इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर। ये जी इतने एक्सलरेशन आई है वो इतने किसी एक्सलरेशन किन किया ग्रैविटी ने इस करके जी फोर्स हो गई है m इंटू जी। सो जी की वैल्यू आ गई इतने जी m अपॉन r square। This is the formula of acceleration due to gravity। Acceleration due to gravity जी ग्रेविटेशन के अर्थ की हैगी आ वो जी ग्रेविटी आ तीन तरीके नाल इफेक्ट करती है। डिपेंड्स अपॉन द इफेक्ट द हाइट वेरिएशन देयर हाइट्स द वेरिएशन due to depth when the distance decrease and rotations of the earth और चौथी आ गया शेप ऑफ द अर्थ। नाउ वी डिस्कस द फार्मूला वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटी और डिफरेंट कंपोनेंट्स। नाउ इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g फॉर दिस इक्वेशन सो g is equal to 6.7 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम और mass or radius earth is a spherical in size so its the radius about 3.8 पर 400 किलोमीटर भी नोट करते हैं सो 3.68 10 to the power 6
मीटर्स। सो ये मीटर में सी मीटर कन्वर्ट किया और अर्थ की जी डेंसिटी हैगी आ रो डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हैगी है और असी ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी is equal to mass upon volume. So here mass is equal to m, volume, this is a spherical in shape, so here volume of sphere 4 by 3 pi r cube. So we find the value of mass 4.3 pi r cube into rho. So here we calculate the value of m, g value we know and r the radius. So putting this value and we find the gravities. So g is equal to value of g 6.7 into 10 raised to the power 11 Newton meter square per kilogram square into mass की value 4/3 pi r cube into rho. Next upon r square. So r square, this is value 6.38 10 raised to the power 6 plus square. So putting the value, we calculated g is equal to 6.7 10 raised to the power 11 into 4 by 3 pi 3.14 r the value 6.38 10 to the power 6 power 3 into rho. Here the density here 5.5. Here density is grams, but here mass in SI system, so convert into kilograms. So calculate kilograms. Rho is equal to 5.5 grams. एक किलोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ग्राम ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ डिवाइड बाय 1000 into सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर into 100 power 3. So here we cancel, this is value -3. So here the value of rho is equal to 5.5 10 raised to the power 3. ये कैंसिल हो गया ना, थर्ड को आगे वैल्यू किलोग्राम मीटर क्यूब. So putting this value over here 5.5 over 6.38 10 to the power 6 the square. When we calculate the value of g about calculate this value 9.7 meter per second square. So it is the